Hello and welcome back. I'm Bhavesh Atara from Cloudfolks Hub. We are always having one tension. As we are using AWS pre-account for our routine learning process or for examination preparation or sometime for experiment. Now, when we are completing our practical or like a project, we are always forget to delete our resources. And at the end, we are getting billed. Now, I want that you do not need to pay any bill. So, I just created one easy to use software based on AWS Nuke. As you know that in AWS we have one tool known as AWS Nuke, which is used to delete all the resources from our AWS account. But this tool is kind of command line tool and we need to configure one file.config.yaml and because of this लोग इस टूल को बहुत सारे यूज़ नहीं कर सकते हैं क्योंकि मैं ये कहूँगा कि ये टूल इतना यूज़र फ्रेंडली नहीं है। जब हमारे क्लाउडफॉक्स कम्युनिटी मेंबर के बिल आने लगे 2-3 लोगों ने हमें ये बताया कि सर बिल आया है, इट कैन बी लाइक $1, $2 और $3, $5, तो हमें ये बहुत बुरा लगा। मैंने उनको सजेस्ट किया कि आप न्यूक यूज़ कर सकते हो, बट देन दे आर आस्किंग लाइक क्वेश्चन, दे डोंट नो हाउ टू यूज़ न्यूक। सो आई थॉट लाइक लेट्स क्रिएट वेरी इजी टूल so anybody can use this nuke and delete all the resources. Here, I'm not talking about nuke. हमने Cloudfolks community में specifically Cloudfolks members के लिए एक टूल बनाया है जिससे आप nuke का ही यूज़ करके सभी resources delete कर सको। और ये टूल हमारे स्टूडेंट ने यूज़ किया तो हमें लगा कि क्यों ना सभी लोग इसको यूज़ करें जिससे जो स्टूडेंट्स हैं, जो लोग AWS लर्न कर रहे हैं, उसको ये अननेसेसरी पेमेंट ना करना पड़े। पहले मैं आपको बताऊंगा कि ये आप कैसे यूज़ कर सकते हो। लिंक ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में है, आप डाउनलोड कर लो। जैसे ही आप डाउनलोड करोगे तब आपको इसमें ये 3 फाइल मिलेगी। ओके, ये 3 फाइल आपको मिलेगी। अब हम डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं, पर उससे पहले हमें 2-3 चीज़ें करना है। सबसे पहले देखिए, अभी मैं AWS अकाउंट में हूँ, मेरे पास ये EC2 इंस्टेंस है, रनिंग है, राइट। दूसरी बात है, मेरे पास एक इलास्टिक IP भी है, ओके, इलास्टिक IP भी है। तो ये रिसोर्सेज अभी मेरे पास है जिसको मुझे ऑटोमेटिकली डिलीट करना है और मैं अभी मुंबई रीजन में हूँ, राइट। अब इसको यूज़ करने के लिए सबसे पहले आपको एक काम करना पड़ेगा, आपको जाना पड़ेगा IAM में, आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट में, राइट। यहाँ पे जाने के बाद आपको यहाँ पे जो आपका एलियास है वो बनाना पड़ेगा। ज़्यादातर आपको यहाँ पे अपने अकाउंट नंबर ही दिखाई देंगे, तो आप यहाँ पे एडिट करके कोई भी एक एलियास दे दो, एक यूनिक नेम होना चाहिए, राइट। तो वो आपको एक एलियास देना पड़ेगा। जैसे अगर मैं डिलीट कर देता हूँ, राइट, तो देखो इस तरह से आपका होगा। मैं यहाँ पे क्रिएट कर देता हूँ और Cloudfolks 1 जो था वहीं दे देता हूँ, राइट। देखिए ये एलियास होगी। ये करना ज़रूरी है, अदरवाइज ये टूल काम नहीं करेगा, न्यूक भी काम नहीं करता है, राइट। हो गया। अब यहाँ से मैं ये EXE को रन करूँगा, राइट। अब अगर आप विंडोज़ में फर्स्ट टाइम रन करते हो तो मे भी आपको कोई एरर आए, राइट। तो ये जेन्युइन सॉफ्टवेयर है, उसको आप अलाउड कर दो, नो नीड टू वरी, और आपको ऐसी एक स्क्रीन मिलेगी। ये 100% जेन्युइन है गाइस, तो आप इसको डायरेक्टली विंडोज़ से रन कर सकते हो, नो नीड टू वरी। ओके, अब देखिए सबसे पहले मुझे देना पड़ेगा अकाउंट ID। सो मैं यहाँ पे जाऊँगा, यहाँ पे मेरा अकाउंट ID है, मैं इसको कॉपी कर लूँगा, राइट, और ये मैंने कर दिया पेस्ट। अब मुझे देना पड़ेगा एक्सेस की एंड सीक्रेट की। तो यहाँ से मैं सिक्योरिटी क्रेडेंशियल्स में जाऊँगा। मैंने प्रीवियसली एक की जनरेट करके रखा था, राइट।
अभी मेरे पास वो नहीं है, तो इसको मैं डिलीट कर देता हूँ. ओके, I'm going to generate new key. Okay, so let's click on create access key. I understand this. This is my access key. I'm going to copy this over here. Then here it is a secret key. So this is my secret key. Do not share your secret key and access key with anybody. Okay, so please keep this in mind. Here it is also encrypted, so you don't need to worry. Now you have to say that in which region you want to delete all these resources. So I have everything inside my EC2 and everything is in Mumbai. Okay, so Mumbai region is known as AP South 1. So what I'm doing, I'm going to type AP South 1. Okay, and if I were to click on run nuke, all the background process you can see over here. Okay, see, this is my alias name. Okay, I have to wait for a 15 seconds, then it will start this process. Okay, so let's wait. Yes, process has been started. Now this is like first is like a dry run. It will tell me that we are going to remove all this. Okay, and then it will start removing all these resources. It will take some time, but you do not need to find out each and every resources, and you are not going to delete this, like you are not going to do this. Okay, it will delete all resources step by step. Okay, and after some time my account will be clean and clear. Now I'm going to fast forward this process, and once this process will be end, I'm going to show you that I don't have EC2 instance or anything. Okay. Now look at this. I got this nuke completed. Okay, 31 finished. Now इसको मैं क्लोज कर दूंगा और अब हम रिफ्रेश करेंगे स्क्रीन को. इंस्टेंस रनिंग 0, मेरे इंस्टेंस नहीं है. Even I am going to the elastic IP. Okay, no elastic IP. Even it will delete my default VPC as well. So if I'm going to the VPC, if you have any net gateway or anything, it is going to remove everything. So the idea is, just after completing all your practical and anything, go to Nuke. Okay, run your Nuke tool, and it is going to remove everything from your computer, from your AWS account. Right? It is so easy to use, and anybody can use this. But keep this in mind, that do not disclose your access key and secret key with anyone. Right? So you can download this tool. Download is available over there in the description. You can download this from the link. Thank you very much. Goodbye and happy learning.